वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हैं हैडलाइनस के नाल। गाजा उत्ते हमले दौरान इजराइल ने की वड्डी गलती। अपने ही देश के 3 नागरिकों की लई जान। इस जंग के विच हुण तक 19,000 तो वध लोगों की हो चुकी है मौत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विच मुड़ आमो सामने होए इजराइल और फलस्तीन। इजराइल ने कहा है कि हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। कुछ दिनों की शांति तो बाद एक बार फिर बंब धमाकिਆਂ नाल गूंजिया यूक्रेन। रूस ने ड्रोनां तो कीव उत्ते दागियां मिसाइलां। इमरान खान नूं अयोग ठहराए जाण नूं चुनौती देण वाली पटीशन उत्ते होई सुनवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान चोण कमीशन नूं जारी किया नोटिस। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल और हमास विचाले जंग लगातार जारी है। इजराइल के वलों गाजा उत्ते तड़ातड़ हमले किए जा रहे हैं। इस विचाले हुण इजरायली फौज वलों गलती नाल अपने ही नागरिकों की जान ले ली गई है। फौज के वलों इसकी पुष्टि भी की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल मुताबक गाजा के शेजिया दे विच इजरायली फौज और हमास विचाले मुकाबला होया। इस हमले दौरान इजरायली फौज ने गलती नाल 3 इजरायली कैदियों को मार दिता। इजरायली फौज ने इस घटना की जिम्मेवारी लैंदियां इसनूं मंदभागा करार दिता। तुहानूं दस दें कि इजराइल हमास जंग विचाले हुण तक तकरीबन 19,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल अजे भी जंग नूं खत्म नहीं कर रहा। इजराइल का कहना है कि जब तक वह हमास के कब्जे विचों सारे कैदियों नूं छुड़ा नहीं लैंदा और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता यह जंग जारी रहेगी। In addition to recovering the bodies of murdered hostages Corporal Nick Bizer and Sergeant Ron Sherman, the IDF also recovered the body of dual Israeli-French national Elia Toledano, aged 28, who was abducted from the Nova Music Festival and murdered in Hamas captivity. Among the remaining 132 hostages in the Hamas terror dungeons are 113 males and 19 females. There are 2 children under 18, the Bibas infants, and 10 people over 75. 121 of the hostages are Israelis, another 11 foreign nationals. Of the 132 hostages, 20 have since been murdered and Hamas is holding their bodies hostage. There are 110 survivors of Hamas captivity, 86 Israelis and 24 foreigners. A further 8 hostages were murdered in captivity, with their bodies since repatriated. There are still 5 missing persons since 10/7. Some operational updates. Israeli forces continue to target Hamas terrorists in their strongholds, even as they fight in civilian dress out of civilian buildings. In northern Gaza, IDF forces have secured and destroyed the Hamas Shaja'iyah battalion's command and control center, having already eliminated the battalion's commander and then his replacement. In Khan Yunis, IDF troops have been conducting targeted raids on terror infrastructure, killing terrorists, destroying weapons compounds, and locating tunnel shafts containing motorbikes used in the 10/7 massacre. Israel continues to target Hamas terrorists hiding underground, turning their terror tunnels into death traps. Last night, the IDF and Shin Bet released special footage from an operation by the Combat Engineering Yahalom unit to kill terrorists in a major tunnel. This week, the Israeli Air Force has also targeted and destroyed Hamas military assets located along the border between Gaza and Egypt. Hamas had used those assets to smuggle weapons into Gaza, and their destruction will now hinder Hamas's attempts to rearm. There will be no hiding place for the 10/7 monsters. Humanitarian update. The Kerem Shalom crossing has been open since December 12th for inspections of aid trucks, in addition to Nitzana. That move makes it possible to more than double shipments of humanitarian necessities into Gaza. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सैशन का एमरजेंसी विशेष सैशन बीते दिनी मुड़ शुरू होया। इस सैशन के विच पूर्वी यरूशलम और बाकी के कब्जे वाले फलस्तीनी खेतर के विच गैर कानूनी इजरायली
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। The Israeli assault is a war against Palestinian civilians, Palestinian children, Palestinian history, Palestine presence, Palestinian existence. It targets the population, the hospitals, the infrastructure, the homes, the bakeries, the landmarks, the historic mosques and churches that stand witness to our diverse and long history. Israel has destroyed and flattened entire neighborhoods, displaced virtually every Palestinian in Gaza, brought back the scenes and memories of the 1948 Nakba with the massacres and the forced transfer of our people. It also targets our present and future, killing engineers and doctors and poets and academics. It also targets those who could document the crimes and inform the world, the journalists. We mourn one of those journalists, Samer Abu Dagga, wounded in an Israeli drone strike and left to bleed to death for 6 hours. Countries have a moral and legal obligation to act, to make the horrors stop, to save human lives. Mr. President, 1 million Palestinian children in Gaza are facing a death sentence that can take effect at any moment. Remember what the Secretary General said. The Gaza Strip is a graveyard of children. No country should be part in issuing such death sentences or accepting to co-sign with the murderers the death certificates for our children. Mr. President, people around the globe have been calling for an immediate humanitarian ceasefire, of course, including the Secretary General and all the leaders of UN humanitarian agencies. The United Nations, through the Secretary General and all its agencies, have been calling for an immediate humanitarian ceasefire. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਦ ਅਰਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Just hours ago, Hamas rocket was fired towards the vicinity of the Temple Mount, Haram el-Sharif. And the Iron Dome, Israel's Iron Dome, intercepted the missile and defended Al-Aqsa Mosque from Hamas. Think about this. Israel is defending Al-Aqsa Mosque from Hamas's missiles. When there was a ceasefire in place that was violated by Hamas's planned massacre. Planned. I could discuss the mass rape and mutilation of women, the burning of entire families alive, the beheading of babies. But I have already stood here and showed you footage from that dark day.
I have repeatedly discussed the horrors and the bloodshed, but sadly this body prefers to keep its head in the sand. Sadly, this is what the UN has become. So instead of talking about the past, I will try to remind this body of the present and talk about the future. The future that awaits us if the Hamas Nazis are not eliminated. If there's a ceasefire that will allow Hamas to regroup, to rearm, to continue their reign of terror in Gaza. That's the meaning of a ceasefire. What is a humanitarian ceasefire? Is it a ceasefire for 6 hours to allow food and water to enter Gaza? Clearly not, seeing as every single day Israel facilitates the entry of hundreds of tons of food and water. An end to the war means turning our backs on the hostages. It means ensuring Hamas's continued rule in Gaza. I don't get it. We're 18 years of oppression in Gaza, by the way, against Palestinians, digging terror tunnels into our soil, into our territory, and indiscriminate rocket fires, thousands and thousands on Israeli civilians. That wasn't enough for you? All a ceasefire secures is a future for the genocidal jihadists. It is only Hamas that this resolution is defending. Stop hiding your intentions behind your suits and diplomatic wording. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨ ਭਾਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3/4 of a century ago, in a world decimated by war, the United Nations General Assembly proclaimed that all human beings are born free and equal in dignity and rights. The Universal Declaration of Human Rights is a clarion call to act in accordance with a fundamental truth, that each of us is an equal member of a single human family. 75 years on, the world must recall that wisdom, and it must act on it, because human rights are under attack around the world. Conflicts are raging, with appalling consequences for civilians, as we are dramatically witnessing every single day with the immense deaths and suffering in Gaza after the horrors of the 7th October attacks. Inequalities are deepening. Hunger and poverty are rising. Women's rights are stalling and in some cases going into reverse. Civic space and media freedom is being rolled back, and new threats are blossoming, from catastrophic climate disasters to artificial intelligence, which holds the potential for immense possibility, but also for immense peril. And age-old hatreds are resurging with a vengeance, from racism to xenophobia and religious intolerance. People are being violently targeted solely for their religion, their ethnicity, or who they love. But across the world, human rights defenders are lights in the darkness. They are changing lives, fighting, educating, and holding power to account to make human rights a living, breathing reality. This is deeply dangerous work. Last year, almost 450 human rights defenders, journalists, and trade unionists were killed, 40% more than the previous year. 33 vanished without a trace, a staggering 300% increase from 2021.
So, Excellencies, in this context, today's Human Rights Prize is all the more important. This prize has recognized the achievements of human rights defenders since 1968. It has honored luminaries such as Nelson Mandela, Malala Yousafzai, and the International Committee of the Red Cross. ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋर्ट ने 29 अगस्त ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ। दूसरा, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से लाहौर में आज केस की जो है वो समाअत है और उसके साथ साथ जो ये समाअत है इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, और दूसरी जो समाअत है वो ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने पहले 2012 में 22 में करवाए और फिर अभी दोबारा करवाया इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर। तो जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था, फैसला दिया था कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उस ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उसकी भी आज समाअत है। बोगस केसेस में जिस्मानी रिमांड की क्या ज़रूरत है? मैं हर चीज़ को समझता हूँ कि ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता, इसकी नोटिफिकेशन ही गलत है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ऐसे ट्रायल की कोई गौर साहब कल सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है उमर नियाजी को, जो आपकी पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट में। कल आपका कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। देखिए, पहले दिन कोई वकील पेश नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार ही है, क्योंकि आप केवीएट तब फाइल कर सकते हैं जब आपके पास सर्टिफाइड कापी आई हो, क्योंकि अभी तक कुछ मिला नहीं था, वकील पेश नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, हम तो इलेक्शन की किसी सूरत डिले नहीं चाहते। हमने हमारे एक इस्तदा ज़रूर रही है और रहेगी हमेशा से कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आरओज़ का होना ये इस बात की अक्कासी होगी कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो पिटीशन दायर की गई है ये जमहूरियत को डिरेल करने का मतलब है। मैं ये समझता हूँ लग रहा है कि जो लग रहा है कि पीटीआई को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। नहीं, पीटीआई को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पीटीआई की सख्तियाँ ज़रूर बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि ये हर शहरी का बुनियादी हक है जो इलेक्शन लड़ता है कि वो अदालत में जाके कहे। क्या थी इलेक्शन? हमारी बेसिक पिटीशन ये थी, किसी सूरत नहीं थी। हम तो खुद पे इलेक्शन में यही तो हम कह रहे थे। पिटीशन हमारी सिर्फ ये थी कि जो रिटर्निंग अफसरान है वो काइंडली जुडिशरी से लिए जाए, बजाय इसके कि वो डिप्टी सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि आप जमहूरियत डिरेल करना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ही बताए क्यों लग रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के सारे हर दिन वहाँ बैठे रहते हैं कि जी जमहूरियत को डिरेल होने से बचाए। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बचाएगी। ਦਿੱਲੀ ਵੀਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਘਟਨਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ। घटना के समय लोग बदलाव की मांग करते हुए सड़कों उत्ते उतर आए सन, पर उस हादसे के सालों बाद भी असी उत्थे ही खड़े हाँ। औरतों खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन वध रहे हैं, कुछ नहीं बदलेगा जदों तक कि अपराधियों को यह डर नहीं होगा कि अजिहे अपराधों लिए कानून व्यवस्था उन्होंने छड्डेगी नहीं। दिल्ली वीमैन कमीशन की प्रधान ने निश्चित तौर पर सज़ा मिलने ते जल्द सज़ा दिते जाने की अपील की और कहा है कि सरकारों को अजिहे संवेदनशील मामलों को गंभीरता नाल लेना चाहिए। हमें दिल्ली की जगह जगह से कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कि बस शेल्टर्स बहुत ज्यादा अंधेरे में हैं। ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई तो हम इंस्पेक्शन पे निकले हैं। अभी हम रमेश पार्क के बस स्टॉप पे गए थे और अब हम ललिता पार्क के बस स्टॉप पे हैं और दोनों ही जगह बहुत ज्यादा अंधेरा था। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पे पोल पे लाइट तो लगी हुई है लेकिन जल नहीं रही। कई सारी जगहों पे लाइट भी नहीं लगी हुई है। 1 किलोमीटर तक इतना ही ज्यादा अंधेरा है। कई महिलाओं से मैंने बात करी तो उन सब ने बताया कि कैसे कई साल से यहाँ पे अंधेरा है और उन्हें बहुत असुरक्षित महसूस होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 16 दिसंबर आ गया है, अगर यही हाल रहा तो दिल्ली में, देश की राजधानी में महिलाएं और बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी?
बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। हम नोटिस इशू करें दिल्ली सरकार को कि ये तुरंत ठीक किया जाए। बस स्टॉप्स पे तो कम से कम लाइट होनी चाहिए, एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। मैं नहीं मानती कि स्थिति बदली है, मुझे तो लगता है स्थिति कहीं ज्यादा बदतर हो चुकी है। आज के हालात ऐसे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स बढ़ता ही जा रहा है और ब्रूटैलिटी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर कितनों में एक्चुअली सजा हो पाती है? लोगों को डर ही नहीं लगता। लोगों को लगता है हमारे देश में कि कुछ भी कर देंगे, किसी भी महिला के खिलाफ कुछ कर देंगे, बच्ची के खिलाफ कुछ कर देंगे और ये सिस्टम उनको बख्श देगा। इसी को बदलने की जरूरत है और 16 दिसंबर पे मेरी सारी सरकारों से अपील है, साथ आइए, मिलके काम कीजिए, महिलाओं के मुद्दे पे कोई राजनीति मत कीजिए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए इस देश में कि अपराधियों की रूह कांपे। स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, मैं यही मानती हूँ, क्योंकि अगर स्थिति बदलती तो एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होता दिल्ली देश की राजधानी में, एक 85 साल की महिला के साथ बलात्कार नहीं होता दिल्ली देश की राजधानी में। हर दूसरे दिन एक इतना घिनौना केस आता है, हर दिन 500 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर आती हैं, 2000 से ज्यादा कॉल्स आती हैं। तो अगर स्थिति बदली होती तो क्या ये सब होता? मैं नहीं मानती और मुझे ये लगता है कि स्थिति तभी बदलेगी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरे देश में इस मुद्दे को लेके संवेदनशील होंगी और इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगी। बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत दिल्ली देश की राजधानी में पुलिस के संसाधन और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि अगर पुलिस अपना काम ढंग से करने लग जाए तो दिल्ली देश की राजधानी बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋषित कर ਦਿੰਦਾ। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। आजकल निशिकांत जी के पता नहीं कौन से पावर्स हैं कि जो वो कहें वो ही जैसे पत्थर की लकीर होती है, लेकिन हकीकत ये है कि देश का पार्लियामेंट में जो ऐसे कुछ हो रहा है तो देश कितना सिक्योर है, दिल्ली कितनी सिक्योर है? क्या लोगों को ये सवाल मन में नहीं उठना चाहिए कि पार्लियामेंट में कोई घुस सकता है? तो सिक्योरिटी के हालात क्या हैं? तो ये पूछना बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है, पूछना भी चाहिए और इसको कवर अप हम तो यही शुक्र कर रही हूँ कि शुक्र है उसमें से कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं था, नहीं तो क्या मुद्दा बन जाता। आज भी मुझे इस चीज़ का ये है कि जे उसमें कोई सरदार होता या कोई मुस्लिम होता तो पता नहीं इसको क्या रंग दिया जाता। और शुक्र है कोई बीजेपी का एमपी था जिसने ये पासेस सैंक्शन किए, जो कोई ऑपोजिशन का होता तब भी पता नहीं क्या का क्या बन जाता। सो वो पॉलिटिक्स थी, दैट असाइड। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और दैट इज़ अ केस ऑफ मेजर कंसर्न कि इतनी सुरक्षित जगह में जो ऐसा कुछ हुआ तो फिर सोचना तो पड़ेगा कि लोग के मन में ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੜਕੇ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਵ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਵ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਨੀਪਰੋ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਯੂਨਿਟ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਨੀਪਰੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਡਾਰਨਿਤਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਪੋਡਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। रूस ने अद्धी रात तो बाद यह हमला किया।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਨੀਪਰੋ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।